Okay, ji. So good morning everybody and once again welcome back in today's class, day number 28. In the last 2 days, we discussed about the CMDB. CI क्या है, assets, relationship, काफी कुछ हमने देखा. Theory भी, we understand the theoretical part as well. We see yesterday practical as well, status, install status, hardware status, and all things with it. ठीक है. Now I bring another topic. Again, it is based on the CMDB only. ठीक है. But interesting topic. It is a hot cake in the market. Why? Because companies are implementing this, and this is called CSDM. Stands for the Common Service Data Model. ठीक है, Common Service Data Model. सर्विस क्या होती है? क्या होती है सर्विस, बताओ बताओ. सर्विस हमने डे 1 पे डिस्कस किया था. क्या होती है सर्विस? वही सर्विस की बात कर रहा हूं मैं, तो कुछ और नहीं कह रहा. A value which a customer want to be achieved without taking the risk, right? Without risk and the cost, right? ये तो है सर्विस की definition. Yeah. What I am giving you now is service. Training as a service, right? Yes or no? Training as a service. Because it is a batch, or let's say Sujita and Virisha, two sisters. Atul, we are coming together to learn from you. हमारे लिए क्या डिस्काउंट रहेगा? ये can you give us the 1-to-1 classes as well? हम 2 लोग हैं. Go to McD. I need a meal. What that meal include? McAloo tikki, कुछ fries, a cool drink. That is called offering. या क्या offer? What you are offering for that service? Can I take separate McAloo tikki? Yes, you can take it. But sir, McAloo tikki will be cost 40 rupees. At 20 rupees more, you will get a meal as well. That's called the offering. Problem statement क्या था इसको लेके आने का? That is important. I am an IT department. I do the services to HR department as well, to legal department as well, to finance department as well. ठीक है, मैं सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता था. HR always says, या 80 वाले गाइस यार बहुत बढ़िया है, मस्त सर्विस है इनकी, ठीक है. बट लीगल डिपार्टमेंट वाज ऑलवेज कंप्लेंट, नहीं, these guys are not good, these guys are not good यार. SLA delayed है, रिक्वेस्ट फेस करो 4 दिन के बाद अप्रूव, they fill it, all the things will be there. ठीक है. And the other department also give the same kind of feedback. ठीक है. अब डिपार्टमेंट एक, I'm giving the service also same. Still people are not happy with me. How I can evaluate my service? It is a good, bad, happy, sad, what? To overcome this problem, because to overcome this problem, ServiceNow, so let's introduce a new concept and call service. आप जो भी बेचो किसी को, if you sell out anything to anybody, sell out in the form of a service. Not an example, a bigger example. The IT companies, how they get the customers, or what they told to the customer that what we're doing. Let's say I'm running my own company and I go to Amisha, Harshal, Rituja as a customer. Amisha will say, okay, Atul, what's your portfolio? Amisha, we are dealing in the finances, we're dealing in the support, we're dealing in the development and the maintenance as well. Oh, you're dealing in the development as well? Yes. What type of development? So we are expert in the Java services, we're expert in the .NET services, we're expert in the ServiceNow services as well.
Okay, can you do the deployments as well? Yes, we have a deployment teams as well, so we providing deployment services as well. Did I talk about any CI? I talk about the services. कि आपकी कोई भी Java application है which you're using, we are able to deploy that. Don't worry, we are able to build that, we are able to support that. हमारे पास आओ सर्विस ले लो हमसे. Then everything will be on us. If I ask anybody, अच्छा बताओ in which project you are working? अरे I am working in X project in that particular team. But do you know that how that X project particular team created? This was a journey. आपकी कंपनी से कोई सीनियर लीडर या सर्विस ना सॉरी सेल्स का कोई पर्सन प्रीसेल्स का पर्सन गया किसी कस्टमर के पास उसको बताया what we are doing, what is our portfolio. They ask for the cost, they ask for the everything. We make a deal sign, we got a project, we appoint the project manager, we create the different teams and then we hire you to support that particular client. ये यहाँ से कहानी बन के आती है. But how I am going to sell this thing to the customer? ठीक है, I guess किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, someone has this question in the beginning. What do you mean by the one common data model? उसमें था ना जो पिक्चर में देखिए उसमें था कॉमन डेटा मॉडल कि either you provide a service to the anybody, HR डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, किसी को भी प्रोवाइड करो, बट द बेस विल बी सेम, एक ही डेटा मॉडल होगा. ठीक है, either you make flat, shop, hotel, धर्मशाला, but the foundation will be same. उसके ऊपर तो आप कुछ भी बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, बट मॉडल एक ही रहेगा उसका. अगर होटल है तो होटल का मॉडल ही चलता रहेगा फिर, क्योंकि कॉमन डेटा मॉडल है. ठीक है, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ServiceNow इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट कॉल्ड द कॉमन सर्विस डेटा मॉडल, CSDM. Currently we are on the CSDM 4.0 and 5.0 also coming soon. This is what I heard. I had some glimpse of 5.0 in the last knowledge event. Okay, but they did not launch officially anything as of now, but still it's going on. The screen which I'm showing now is everything for you to understand CSDM. This is 37 pages white paper. I'm telling you my experience. This is 37 pages white paper. I can guarantee you, you can't read more than 5 or 6 pages in a one go. आप खुद ही छोड़ दो, नहीं यार अब समझ ही नहीं आ रहा है. Because in this no technical, in this it's all conceptual and the definition is important here. ये पेपर मैं भेजूंगा नहीं, आपको डाउनलोड करना है. CSDM 4.0 white paper, go and check in the Google, you will find out. ठीक है, what they are saying actually, हम इसके पूरे डीप में नहीं, 37 पेजेस हम नहीं करेंगे. ठीक है, इसका फंडा है, हम वो देखेंगे. What it says, common service means a standard and the shared set of service related definition across our products. ठीक है, what it's saying, common service, a standard and shared set of service related definitions across our products platform that will enable and support true service level reporting. Problem क्या हुआ? I am providing service to the IT, let's say finance department. ठीक है, and I am providing same services to the legal department as well. But when I was creating SLA, it was not giving the right indication to me. क्यों? क्योंकि at the both places I am using the different terms, different concepts, different way of providing services. कुछ common नहीं है उसमें. Why we started this class with the very basic of the cloud computing? Maybe अमीशा कहेगी मुझे तो पता है cloud computing का, अनुषा कहेगी मुझे तो पता है सर मैं काम करती हूँ इस पे. But to bring everybody on the same place, we started that topic. In the same manner it says that when I provide services to the different departments, same platform, same product, but I'm giving the different services to different departments.
ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ द SLA इट्स कॉजिंग ए इशू फॉर मी, क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब डिफरेंट टर्म्स पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं. सो टू मेक श्योर राइट SLA रिपोर्टिंग, दिस CSDM concept has been introduced. क्या सर कमाल करते हो, SLA के लिए इतना काम करती है. यस, to make a good SLA, to make a right SLA, to make a accurate SLA, this concept has been introduced. And data model, a CMDB, see, a CMDB framework across our products and platform will enable and support multiple configuration strategy. है CMDB जैसे ही काम, फ्रेमवर्क वैसे ही रहेगा, वही रिलेशनशिप रहेंगे, वही कंसेप्ट रहेंगे, वही टर्म्स रहेंगी, बट अब वन डेटा मॉडल, मतलब कि क्लासेस प्रॉपर रहेंगी, उसी क्लासेस में आपको रिकॉर्ड डालना है, वैसे रिलेशनशिप सेट करना है, दैट इज कॉल्ड द डेटा मॉडल. CSDM इज नॉट अ कोड, ऐसा नहीं कि exe फाइल उसको एग्जीक्यूट किया, नहीं, और ना ही ये कोई काइंड ऑफ व्हाट आई कैन से रिपोर्ट्स है, सेट ऑफ रिपोर्ट्स, वो भी नहीं है. CSDM इज ए कंसेप्चुअल कंसेप्ट. कंसेप्चुअल तो कंसेप्चुअल तो होगा, तो कंसेप्ट वही है, ठीक है, कंसेप्चुअल है ये, which work on the standard definition, standard rules, standard principles, उस पे ही काम करता है. And they strongly say, if you will not follow our principles, you will not follow our rules, you can be get impacted. Then don't come to us. ठीक है. What we are going to be discuss in the CSDM part is only one thing. Let me come here. Yeah. We are going to be discuss this CSDM model. यही है बस सारा क्रंच. If nobody like, if you do not like milk, but if you like that cream on that milk, that we जिसे मलाई कहते हैं, वो खा लोगे तो भी लगेगा दूध ही जैसा, अपना काम हो गया. That is more powerful. तो पूरा क्रंच यही है. तो लगेगा चार तो डब्बे बने हुए हैं, नहीं. If you see every box has its value here. Yeah. Let's understand this part. First thing first, what I want to sell out to my customer, that is called sell and consume domain. Total 5 domains हैं इसमें. Sell, design, build, manage, and नीचे अगर आप थोड़ा सा इसमें करोगे, स्क्रॉल करोगे, you will find the foundation. चलो यहां से शुरू करते हैं फाउंडेशन से. Now tell me one thing. We did CMDB yesterday, right? We saw assigned to managed by managed group. वो डेटा कहां से आ रहा था? From which table it's becoming? फाउंडेशन डेटा. हाँ, कहां से? यूजर टेबल और ग्रुप टेबल, यूजर टेबल. ग्रुप टेबल, यूजर टेबल. Correct. Same thing applicable here. They are saying you are building any service, that's fine, but anything related to that building foundation, चाहे उसका प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस क्या होगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, उसके मॉडल्स क्या होंगे, उसका लोकेशन क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, वो सारा का सारा फाउंडेशन में जाएगा. ऐसा नहीं कि अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग चीजें आप बनाना शुरू कर दोगे. नो, you have to be store everything in this tables only if you're building a new service. That's the one part. तभी तो कॉमन डेटा मॉडल बनेगा ना. तो my foundation includes all the foundation data plus anything on the business processes, anything on the contracts, anything on the product models, anything on the CMDB groups, वो सब यहाँ पर आएगा मेरा फाउंडेशन. अब आप चाहे इसको बिल्ड करो, चाहे इसको बिल्ड करो, चाहे आप इसको छोटा करते हैं, चाहे आप इसको बिल्ड करो, चाहे इसको बिल्ड करो, इनमें से किसी को भी बिल्ड करने के लिए डेटा तो यहीं से आएगा, फाउंडेशन डेटा. ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन है ये. ठीक है. जब ये चीज क्लियर हो जाती है, फिर बात करते हैं ये क्या है. ठीक है. इन द अर्ली डेज, अभी भी होता है हमारे शहरों में तो एटलीस्ट, कि
इन द कॉलोनीज और जो गली रहती है वहां पे सब्जी बेचने वाला आता है, राइट? स्क्रैप वाला आता है, मंदिर वाले आते हैं, गौशाला वाले आते हैं. हाउ दे कॉल एवरीबॉडी. किसी घर तो नहीं जाते वो. एंड दे आर सो मॉडर्न नाउडेज, दे हैव अ स्पीकर. Like in our in my hometown, in the morning there's a van came, government van came to pick up the garbage. ठीक है. अब उसका एक टोन पक्का है. They have a standard music. And as soon as that van entered in the colony, we came to know, yes, it is there. We have to pick up our take our garbage bins outside so that that person can come and take it out. ये क्या है? Sell and consume. How you are selling your things in the market. Pick up any company, any company, any company. Every company has its own portfolio, right? जब शादी के लिए बात चलती है ना तो कहते हैं कि बायोडाटा भेज दो लड़के का, लड़की का बायोडाटा भेज दो. बट दैट बायोडाटा इंक्लूड्स यही चीजें, नाम क्या है, एज क्या है, रंग कैसा है, क्वालिफिकेशन कैसी है, तो वो चीज. बट इफ यू गो फॉर काइंड ऑफ अ मॉडलिंग, मैडम पोर्टफोलियोज फोटोज चाहिए, साइड लुक, अपर लुक, यहाँ से वहां से फलाना ढिमकाना. ठीक है, आजकल तो फोटोग्राफर्स भी करते हैं शादी में. सर थोड़ा सा आगे आ जाओ, मैडम पीछे चले जाओ, ये तो कर लो, वो कर लो. सो पोर्टफोलियो सेज दैट व्हाट सर्विसेज आई कैन प्रोवाइड. नॉट आई कैन, आई एम प्रोवाइडिंग. अतुल पोर्टफोलियो इज कंसल्टिंग, करियर गाइडेंस, ट्रेनिंग, ब्लॉगिंग, और नॉट ब्लॉगिंग, चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं. ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो है. इफ एनीबडी नीड एनी सर्विस इन दैट, आई कैन प्रोवाइड. अतुल मेरे लिए कंटेंट बना दोगे क्या? बना देंगे, पैसे लगेंगे, बिकॉज आई एम गिविंग सर्विस, राइट? क्या चाहिए? एक पीपीटी बना दो सर्विस ना, बढ़िया, ठीक है, बन जाएंगे, 500 रुपये लगेंगे. आई टेल यू, आई डिड दिस थिंग इन माई कॉलेज डेज, इन माई एमसीए डेज. आई वॉज सो कीन टू मेक द प्रेजेंटेशंस. मुझे बहुत मजा आता प्रेजेंटेशन बनाने में. ठीक है, क्योंकि there was a rule every semester we have to be everybody has to present the one case. तो मतलब 60 लोग थे तो 60 प्रेजेंटेशंस होंगी ही होंगी क्लास में. ठीक है. सो सम पीपल आर सो बोर ऑन दिस पार्ट. अरे कौन बनाएगा यार प्रेजेंटेशन? सो व्हाट दे डू, आई प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन. इट वाज वेरी अप्रिशिएटेड बाय माय टीचर एज वेल. उसके बाद तो होड़ लग गई हमारी क्लास में अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने की. Then people start approaching me, Atul, can you make my presentation? हाँ बना दूंगा, मुझे अपना डेटा दे दो, एक सॉफ्ट फाइल दे दो अपनी, मैं बना दूंगा, बट आई विल चार्ज. ओके, क्या? आई नीड वन बिग कैडबरी चॉकलेट. फिक्स कर लिया मैंने ये. इफ यू वांट आई कैन क्रिएट इट इन 2 days 3 days, इट विल बी रेडी. अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, क्रिएटिव टाइप से प्रेजेंटेशन होगी, सो यू कैन डू इट. दैट इज माई पोर्टफोलियो. ठीक है. अब उस पोर्टफोलियो को जब मैंने मार्केट में लॉन्च किया तो मैंने लॉन्च किया एज ए कैटलॉग. हमने जो भी बात की सर्विस कैटलॉग हमने बनाए, हमने वहां पे लॉन्च किया. एंड इन दैट वी हैव अ बिजनेस सर्विस ऑफरिंग एंड बिजनेस सर्विस. अब यहां पे मुद्दे की बात करते हैं. लेट्स कम बैक हियर. ठीक है, ये कंसेप्ट आज सारा कंसेप्चुअल पे ही है. CSDM 0 मैं इसलिए ओपन कर रहा हूं क्योंकि ना ये जो स्क्रीनशॉट है थोड़ा सा अधूरा है. ये रहा. Let me show you this. ये देखो. ठीक है, इसको थोड़ा सा ना ये है. देखो सर्विस पोर्टफोलियो क्या है मेरा, क्योंकि देखो CSDM का बेस पता है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट. CSDM का बेस है दैट एवरीबडी विल बी यूजिंग द स्टैंडर्ड डेफिनेशंस. Yesterday, not yesterday, on Saturday someone
message me on the WhatsApp. Atul, I need your help in the HRSD. I want to create some kind of content for the end user. मैंने बोला HR तो HRSD एंड यूजर के लिए होता ही नहीं है, ये तो एम्प्लॉइज के लिए होता है. Oh, sorry, yes, you're right, it's for the employees. I want to create some content for the contact desk. मैंने कहा भी तो आप एम्प्लॉइज करते हैं, आप कॉन्टैक्ट डेस्क पे पहुंच गए. अब वो कॉन्टैक्ट डेस्क नहीं होते, वो एजेंट्स होते हैं. इट मींस वी नो बट वी इंटरचेंज. जो इन्होंने अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल में लिखा है दैट एवरीबडी हु इज सेइंग बिजनेस सर्विस मींस दिस इज अ बिजनेस सर्विस. चाहे आप बोलो, चाहे हर्षल बात कर रहा है, चाहे सर्विस नाउ कोई भी पर्सन बात कर रहा है, एवरीबडी विल यूज द सेम डेफिनेशन ऑन दिस पार्ट. तभी तो कॉमन होगा ना. आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है. गाइस, वी आर नॉट इन द कॉमन पेज. मतलब सबकी एवरीबडी हैज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कंसेप्ट. जब कोई सॉन्ग प्रिपेयर होता है, जब कोई परफॉर्मेंस प्रिपेयर होती है, स्टेज शोज होते हैं, एवरीबडी ऑन द कॉमन पेज. सबको पता है कि कितनी ताल के बाद हमें जंप करना है, कितनी ताल के बाद हमें क्लैप करना है, कितनी ताल के बाद हमें गाना गाना है, कितनी ताल के बाद हमें कोरस करना है. दैट इज कॉल्ड कॉमन सर्विस. ठीक है. सो व्हाट इज द पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो सेज इट इज अ हायरार्किकल कैटेगराइजेशन ऑफ द बिजनेस सर्विस of the product and service. कि मैं मार्केट में I'm telling the market that what I can do as a company. That is called portfolio. If I say ask Amisha, what's your portfolio? Atul, I can teach psychology, I can teach physical education, I can teach mathematics, I can teach stats. ये इसके portfolio है. मैथ्स में algebra और arithmetic और geometry. नहीं, ज्योमेट्री नहीं है तो मैं सिर्फ दो ही देती हूँ, अर्थमेटिक और अलजेब्रा. दैट इज माय सर्विसेज. सॉरी, दैट इज माय पोर्टफोलियो. नाउ व्हाट इज बिजनेस सर्विस? बिजनेस सर्विस इज पब्लिश्ड टू द बिजनेस यूजर्स एंड टिपिकली अंडरपिन वन और मोर बिजनेस कैपेबिलिटी. अब बिजनेस यूजर्स कौन है मेरे? जो मार्केट में लोग बैठे हैं. आप लोग क्या हो? यू आर माय बिजनेस यूजर्स. If I say training, I am giving a training as a service, then you are my business users. Or I have a capability with this. Atul, मुझे service no admin सीखना है. Yes, I have that capability. I can teach you. Atul, I want to be learn service now HRSD. नहीं, ये मेरी capability नहीं है. I want a training. हाँ, training is my business service. Training में क्या चाहिए? ITSM चाहिए, ITBM चाहिए, ITOM चाहिए, CSA चाहिए, SIA चाहिए, क्या चाहिए? I need ITSM. Yes, I have that capability. And how you order that? By using the service catalog. If you go to any website, who's any customer website, any service provider website, they say contact us. What service you are looking for? ये वही तो होता है कि business service उसका catalog में है. I want to deploy I'm looking for a partner who can help me to deploy my Java application, support my Java application, do my development on Java application. हम करते हैं ना, हमारे पास सब लोग हैं, बताओ. That is called the business service. And what is offering? When you define, ये क्या वर्ड लिखा है कि anybody can read? थोड़ा सा enlarge करना पड़ेगा. Stratification. क्या मतलब होता है? टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, but I'm sure when you start reading, nobody will read as a stratification. क्योंकि हम बहुत स्पीडली जब पढ़ते हैं ना, हमें समझ नहीं कि क्या वर्ड. मैंने 2-3 बार देखा, ये मैथ्स पहले गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. ठीक है. What this definition says? Same example. You go to McD. आज से 4-5 साल, 8 साल, 10 साल पहले जब McD was open, there was no concept of the meal. बर्गर अलग होगा, you have to pay. फ्रेंच फ्राइज अलग रेट पे जाएंगे, and then cold drink भी अलग रेट पे जाएगी. But now they make it as a bundle. Big meal, super meal, power meal, small meal, kids meal. What they did? They're still selling the same thing. अब आप मील लोगे इसका मतलब थोड़ा नहीं कि उसमें बर्गर छोटा कर दिया उन्होंने.
या बर्गर खराब बनाएंगे. What it says that when I offer my business service as per the localizations or the geographical way, और प्राइसिंग पे वेरी हो जाए, अवेलेबिलिटी पे वेरी हो जाए, कैपेबिलिटी पे वेरी हो जाए, या बिजनेस अप्रूवल ग्रुप पे वेरी हो जाए. अन्वेषा सेज अतुल आई नीड योर इन पर्सन ट्रेनिंग. मैं नहीं देता इन पर्सन ट्रेनिंग. अतुल वी आर द 20 पीपल वी नीड इन पर्सन ट्रेनिंग. मैं नहीं देता. अतुल थिंक अबाउट दैट. ठीक है. आई सेड इफ इट इज इन पर्सन ट्रेनिंग द चार्जेस विल बी डिफरेंट and you have to bear my travel expenses. चलेगा. This is what offering I am doing. Atul, I need one-to-one training. Charges will be triple. One-to-one training मिलेगी और offline, online mode में. So when you break your business service in these options, in these criteria, then it is called the offering. ठीक है ना? Like I'll give an example. Everybody know that almost companies are the partner of the customer of the Microsoft. ठीक है. Microsoft says if you need 24/7 support for your maintenance, आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे रोज के. नहीं इतने तो नहीं है. ठीक है, आप 8+5 ले लो, 300 में हो जाएगा काम. ये क्या है? That is offering on the basis of pricing. Availability. Anvesha says, Atul, I need you to be available 24/7, irrespective of your time or my time. ठीक है, I'll charge for the same. I'll available 24/7. Anytime you can just ping me, message me, call me. I'll reply to you. Availability के base पर, but charges will be different. So same service when I'm dividing in the different criterias that become offering for me. और कंपनी इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है. हर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ 24/7 का एग्रीमेंट करके नहीं बैठी. आई स्टिल रिमेंबर इन 2009 और 10 की बात है, तकरीबन 10 की बात है. आई वॉज इन द नाइट शिफ्ट. ठीक है. सो आई वॉज इन द नाइट शिफ्ट एंड आई नीड टू बी ट्रेवल टू हरियाणा फ्रॉम चेन्नई. ठीक है. आफ्टर 1 or 2 days आई हैव अ ट्रेन, सो आई थॉट लेट मी गो इन द ATM एंड गेट सम कैश आउट. उस टाइम तो कैश चलता था. ठीक है. मैं गया आराम से ना, अब नाइट शिफ्ट आराम से चाय वाय पी, ATM पे गए और कैश निकाल लिया. कैश निकालने के बाद आई टेक माई कार्ड आउट एंड आई फॉरगेट माई कार्ड ऑन द ATM ऑन द टॉप. जरूरत नहीं कहीं, चलो पैसे नहीं लेते हैं, इसको कार्ड वगैरह रख देते हैं. मैंने अपना कार्ड रखा और मैं चल दिया वहां से. आगे नीचे चाय वाय पी आराम से, हियर एंड देयर. थोड़ी में देखा यार, मैं कुछ ढूंढ रहा था पर्स में. आई सेड मेरा कार्ड कहाँ गया? आई मिस आउट माई कार्ड. देखा तो उधर देखा नहीं, गिरा हुआ. ATM में गया, ऊपर तो देखा नहीं, ATM के अंदर देखा नहीं था. वहां पर भी डस्टबिन में देखा, किसी ने फेंक दिया, तोड़ दिया. नहीं. Immediately I called to the customer care and I got only 2 options. If you want to report a loss of the card or the block of the card, press 1. For other, please contact after 9 AM tomorrow morning. Because I was not their elite customer. This is what is the offering. Then I call them. I just say, okay, I want to be cancel this card and all things. और जैसे वो कैंसिल किया, मैंने ऊपर देखा तो मेरा कार्ड मिल गया मुझे. ठीक है. But I know, I understand one thing, that I am no entitled to use this service now. कि मैं अभी भी इनसे रात को 11-12 बजे 1 बजे बात करूँ, because I'm not their elite customer. Maybe my balance is not that much which they want, or it's a corporate account or it's a salary account kind of things that. तो ये मेरा कंसेप्ट आता है मेरा इसमें सेल एंड कंज्यूम में. अब मार्केट में तो आपने ढिंडोरा पीट दिया, मैं ये सब करता हूं, मुझसे ये काम होते हैं. देन दे से इन द बैकग्राउंड, कम बैक डिजाइन. एवरी बिजनेस सर्विस मस्ट हैव 1 or more underpin capabilities.
क्या कैपेबिलिटी है अन्वेषा की? शी इज कैपेबल टू मेक अ पीपल फूल। ये मैं बहुत बार मजाक करता हूँ अपनी वाइफ के साथ, अरे आज कुछ बनाते हैं, ठीक है, आई मेक इट फॉर यू, क्या बनाओगे? मैं बेवकूफ बनाऊंगा। इट इज अ कैपेबिलिटी। कई लोगों को होता है ना हंसाने की कैपेबिलिटी होती है, स्टैंड अप कॉमेडियंस कुछ नहीं, नॉर्मल डायलॉग्स होते हैं, बट द वे दे प्रेजेंट मेक द मोमेंट लाफ। सो एवरी बिजनेस सर्विस हैज अ वन और मोर बिजनेस कैपेबिलिटी। जैसे योर कंपनी इज सेलिंग दैट वी आर एक्सपर्ट इन द डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट्स तो कई तरह के होते हैं, ऑन प्रीमाइसेस डिप्लॉयमेंट, ऑफ प्रीमाइसेस डिप्लॉयमेंट, जावा डिप्लॉयमेंट, डॉटेड डिप्लॉयमेंट्स, काइंड ऑफ। डू यू हैव दैट कैपेबिलिटी? अगर इफ आई टेल यू इन अवर कंपनीज वी हैव अ कांसेप्ट कॉल्ड द सीओई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो कैपेबिलिटीज ही होती हैं। कहाँ काम करते हो? अरे आई एम वर्किंग इन द सर्विस नाउ कैपेबिलिटी। मतलब कि अगर सर्विस नाउ का कुछ भी काम आएगा देन आई विल बी द पर्सन हु कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो इसको यहां से डिस्कस करते हैं। ये रहा business capabilities, high level capacity capability, sorry, high level capability required by the organization to execute the business model। सिर्फ डिंडोरा पीटने से ये नहीं होगा कि मेरे पास कस्टमर आएंगे। आई हैव टू बी प्रूव। अ कस्टमर रिक्वेस्टेड मी, वी आर लुकिंग फॉर द जावा सर्विसेज partner. I said yes, I provide the Java services, I have a business service for that। अच्छा, क्या कैपेबिलिटी है? We work on the Java 1, 2, 3, 4 SDK, we build the SDK, we deploy all this thing, will be there। कितने लोग सर्टिफाइड है आपके पास? देन दीज थिंग्स कम इन द पिक्चर। कैपेबिलिटी है ये भी। आपके लोग जो यहां पर है ना, दैट इज योर पावर है। नाउ द थिंग इज दैट बिजनेस कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी नीड समथिंग। अन्वेषा, सुनीता, अमीशा एंड ऋतुजा आर वर्किंग इन द सर्विस नाउ कैपेबिलिटी। ठीक है, बट हाउ आई नो दैट व्हाट सर्टिफिकेशन दे होल्ड, व्हाट वैल्यू दे होल्ड? टू मेंटेन दिस थिंग वी यूज और वी डेवलप a platform kind of things, application, a purchased or internally developed application used to support the business capabilities। दिखाओ डेटा, दिखाओ अपना, चलो देखो। we have 50 resources of service now, out of 50 10 are CTA, 2 are CMS, 5 are 5 mainline certification, 2 are 2 mainline certification, and everybody having the 10 micro certifications। उसको रिकॉर्ड कहाँ करोगे? उसको रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड समथिंग दैट इज कॉल्ड द बिजनेस एप्लीकेशन। ये पूरा बैकग्राउंड में है, कस्टमर को मैटर नहीं करता ये मुझे अपना अपना बिजनेस रन करने के लिए चाहिए। सो इफ यू सी दिस पार्ट, टू एग्जीक्यूट इट्स अ बिजनेस मॉडल एंड टू सपोर्ट द बिजनेस कैपेबिलिटी। कहाँ रिकॉर्ड रखोगे? एक्सेल में रखोगे, कागजों में रखोगे, रख लो, कोई बात नहीं, राइट, कोई बात नहीं। SMS is still working, but why people are using the WhatsApp? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी फटाफट काम हो जाता है उसमें। तो ठीक है, I'll skip this part, not that much important, but it is required to move the data from here and there। ठीक है, now comes the build part। भाई अब build क्या है यहाँ पर mainly? Here the builder saying for the DevOps perspective। ठीक है, DevOps is very big term nowadays। ठीक है, development plus operation। This is, even though this is not immediately required, if you want to implement CSDM, it's not that much required immediately। ठीक है, so we do our build in this particular part, that is optional। कि SDLC component design, sorry, requirement gathering, designing, coding, build and test, वो सब चीजें यहां पर आती हैं और उसके लिए भी एक टीम होती है मेरे पास जो पूरे बिल्ड का काम करती है। ठीक है, आई विल नॉट गो दिस इन मच डेप्थ, विल डिस्कस दिस बिकॉज इसको ना not lot of companies are using at point of time, so they're using 1, 2, 3 and 4 only, because to do this part it's required a lot of configuration on the place first। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे।
अगर अच्छा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे. इफ यू हैव अ गुड फूड, हेल्दी फूड, ठीक है, देन यू विल बी हेल्दी ऑलवेज. ठीक है, पक्का. बट who will give me the good or healthy food? I'm sure that like Harshal is married, Rituja is married, Amisha is married here. ठीक है, whenever you guys go to your in-laws house, हमारे मम्मी पापा का यही सबसे बड़ा रहता है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो नहीं, बट देयर पेरेंट्स. आज हम भी कल हम उनकी जगह पे होंगे तो हम यही बोलेंगे. एंड व्हाट दे से, जैसे देखेंगे, और मेरा बेटा तो कितना कमजोर हो गया. Same thing happen. It's maybe you guys are smiling or laughing, but same thing happen every time. I was in India. Same thing told by my mother-in-law and my mother as well. कमजोर हो गया है, खाना खाता पीता नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है. I was here with my wife. I'm earning good. I'm having good food, but still. तो ये बैकग्राउंड का काम है सारा का सारा. इसका स्क्रीन में यहां से दिखाता हूं ताकि बड़ा दिखेगा. वेलकम. ये देखो. अब बात ये है, the services which I am providing to my customers, who is supporting them in the background? ये मुद्दा यहां पर है. And we are seeing technical services. ज्ञान बांट लिया आपने मार्केट में, बिजनेस ले आए, बहुत अच्छी बात है. ये बताओ पीछे कौन काम कर रहा है इसके ऊपर, वो मुझे बताओ. So this is called manage technical service. And यहां पर we have 3 different personas. The first persona is called application service owner. I said, guys, we build as a company, we build a new application on the Java platform. And Amisha is the owner of that particular application. Owner मतलब पैसे में owner नहीं. If anybody want to change anything in that application, he or she need to be get approval from the Amisha. From the application perspective. मैडम इसमें एक बटन ऐड कर दे क्या? ये वो. But if someone want to make a change in the infrastructure of the Java application, तो अन्वेषा से बात करो, क्योंकि अन्वेषा is a infrastructure service owner. ये changes कब जाएंगे? When these changes will be going to deploy in the production. Contact to Rituja, क्योंकि वो delivery owner है. ये तो मेरे 3 personas हो गए. ठीक है. Now the question is what is technical service? चलो इस पे आते हैं जरा. Yeah. Published to the service owner and typically underpin one or more business service. ये क्या है सर? देखो, published to the service owner. कौन है ये सर्विस ओनर तीनों? And typically underpin one or more business service. इसको मैंने क्या बोला? बिजनेस सर्विस क्या है मेरी? डिप्लॉयमेंट इज अ बिजनेस सर्विस. अच्छा जी, वेरी गुड. टू सपोर्ट दैट बिजनेस सर्विस इन माय कंपनी आई हैव 3 पीपल. जो उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे दैट इज एप्लीकेशन ओनर, उसका इंफ्रा डिजाइन करेंगे दैट इज इंफ्रा ओनर, एंड उसका डिलीवरी डिजाइन करेंगे दैट इज अ डिलीवरी ओनर. अंडरपिन है ये इसके साथ, मतलब कि आई एम सपोर्टिंग दिस, सॉरी, these guys are supporting this. हो सकता है that these guys are supporting only one application at a given point of time. Like if you see, when people become directors, managing directors kind of role, what they say that this person is responsible for Asia and Europe region for the service now services. अब वो उसका बिजनेस ओनर भी हो सकता है, ठीक है, और वो उसका एप्लीकेशन ओनर भी हो सकता है. Then we need to start something new in the services of Asia and the Europe region. So to introduce something new, you have to be asked to the service owner. इन सबसे बात करनी पड़ेगी आपको. Then only you can add it.
not before that. ठीक है, and the same thing goes for the service, technical service offering. When you divide these technical services in the form of the capability, availability, pricing kind of things, then it become the this thing. और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है कैटलॉग आइटम से, और ये कैटलॉग आइटम ये वाला है. बट दिस कैटलॉग आइटम इज यूज्ड बाय द टेक्निकल पर्सन. बिजनेस तो आ गया, व्हाट नेक्स्ट? उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो वहां से टेक्निकल सर्विसेज ऑफरिंग्स में काम होता है. एंड हियर इज माय CMDB. CMDB अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा नीचे चला गया, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है. नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन सर्विस? एप्लीकेशन सर्विस इज अ लॉजिकल सर्विस. देखो, which is deployed, let's say WhatsApp. ठीक है, can you touch WhatsApp? नहीं ना. Can you smell WhatsApp? No. But still using the WhatsApp. अरे WhatsApp डाउन है आज, 2 घंटे के लिए डाउन था WhatsApp. It means when we deploy that service, can you touch these trainings which I'm doing? No, Atul, come on. We can listen you, we can understand your thoughts, but we can't touch this training. We can touch each other, say hi, hello, we can touch, but we can't touch the services. That is called the application service. कि किस environment पे you are going to do this particular changes. I'll show you one example as well after this, then to understand. And every application is linked with the configuration items. ये जो हमने कल डिस्कस किया था सारा स्ट्रक्चर वही है. ये application service can be a dev service, production service, or the test services. I'll give one example to understand this more. ठीक है, और ये आज आपका होमवर्क रहेगा 4.0 एग्जाम्पल. ठीक है, ये देखते हैं. अरे यार ये रुको, लेट मी सी. CSA में एक अच्छा एग्जांपल था इसमें. आई विल शो यू दिस पार्ट. CSDM example. It will help you to understand this thing. ये तो ये मीडियम वाला रुको. डेटा मॉडल और चेंज मैनेजमेंट से रिजेम्बलेंस कम है. चेंज मैनेजमेंट से थोड़ा रिजेम्बलेंस होता है इसका. नहीं, हाँ, बिकॉज क्यों? ये जो उसका डेटा अलग है. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर उसका सेम है, क्योंकि देयर आर आल्सो, मतलब जैसे जैसे चेंज का स्टेटस चेंज होता है, इट गोज टू द डिफरेंट, हर मतलब जैसे रिक्वेस्ट फॉर ऑथराइजेशन है और फिर रिक्वेस्ट फॉर चेंज है, उसके बाद मतलब हर एक स्टीम के पास जाता है ना वो, इसका अप्रूवल, इसका अप्रूवल. तो that is a different case, not this one. ओके, That is different. वो फ्लो से काम करता है, वो इस पे काम नहीं करता. अच्छा, डेटा मॉडल पे काम नहीं करता है. हाँ, मतलब उसका है, बट उसका डिफरेंट डेटा मॉडल है, नॉट अच्छा. सेम डेटा मॉडल. कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा है मुझे, हद हो गई. हाँ, ये है.
गुड, चलो ठीक है। ये वर्किंग मॉडल शेयर टेक्निकल सर्विस एग्जांपल, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां से करके देखते हैं इधर। अरे वेरी नाइस, चलो ये देखते हैं। हेल्थ केयर थोड़ा इजी भी रहेगा, हमें समझ भी आएगा, ठीक है। अब देखो एक हॉस्पिटल है, ठीक है। नाउ अ हॉस्पिटल कैन प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू द कस्टमर्स। कंज्यूमर्स को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, उसका पोर्टफोलियो क्या है। दे आर डूइंग इमेजिंग एंड मल्टीपल पोर्टफोलियो कैन बी देयर, मल्टीपल बॉक्सेज यू कैन पुट। इमेजिंग इज वन ऑफ द पोर्टफोलियो, सर्जरी इज द अदर पोर्टफोलियो, ठीक है। हम एक लेते हैं इमेजिंग पोर्टफोलियो। इमेजिंग मतलब जो आप स्कैन्स वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है। अंडर दैट पोर्टफोलियो आई हैव अ पोर्टफोलियो कैटेगरी। Sometimes we make it like MRI is one of the portfolio category, ठीक है। And to get the MRI, what you have to do, you have to go for the registration. That is my service. If you want to use this MRI as a service, then you have to go for the registration. Now registration can be for the inpatient, जो already admit है उनका भी हो सकता है, और जो OPDs में आ रहे हैं उनका भी हो सकता है। These are two offering, ठीक है। दो ऑफरिंग हो गई मेरी। Now when I have an offering, I have an application as well. Let me थोड़ा सा इसको करते हैं बड़ा, ये रहा Epic production. Let's say you purchase a software from me to capture these information. I said I will provide the services only for the production. कि आपके रन टाइम पे अगर कुछ खराब हो जाए सिस्टम्स में, then call me. So this is my application service. Production system है मेरा ये. Now we say that a business service must have a capability. अब यहां जाओ कैपेबिलिटी पे। कैपेबिलिटी क्या है, पेशेंट मैनेजमेंट। कैसे पेशेंट मैनेजमेंट करोगे, दो है, पेशेंट है और मेडिकेशन है। दो डिफरेंट कैपेबिलिटीज है मेरी। इन दिस कैपेबिलिटी इन द पेशेंट मैनेजमेंट आई हैव माय आउटबाउंड एंड माय इनबाउंड बिजनेस एप्लीकेशन। एक फॉर्म है मेरा जो आउटबाउंड को कैरी करेगा, एक फॉर्म है मेरा जो इनबाउंड को कैरी करेगा, और देन दे बोथ विल गो टू द एप्लीकेशन, और दोनों सपोर्ट इसको करेंगे, इसी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में सपोर्ट करेंगे ये, ठीक है। ठीक है, नाउ कम डाउन। यहां पे थोड़ा सा ये ना, ठीक है। अब इफ आई एम सेइंग दैट आई एम गिविंग द पेशेंट सर्विसेज, पेशेंट मैनेजमेंट आई एम गिविंग, तो उसको डिप्लॉयमेंट भी चाहिए, उसको बिल्ड भी करना है, उसको कोड भी करना है, उसको मेंटेन भी करना है। देन वी हैव अ टेक्निकल सर्विस इन द बैकग्राउंड, प्लेटफॉर्म सर्विस। If I want to make a change in this business application, क्योंकि ये business application इससे related है, या I want to make a change something here, who can help me is my platform team. यार मुझे ना हर बार पेशेंट से पूछना पड़ता है कि उसकी एज कितनी है। Can we create some field here which auto calculate the age on the basis of date of birth and the today's date? हाँ, we can do. So if you want to make a changes in that, you have to go to the platform services. They will evaluate it, and then they will over the services. मतलब प्रोडक्शन में करना है, नॉन प्रोडक्शन में करना है, up to you. And which CI they want to be changed? This is CI. Application change हो रहा है, infrastructure change हो रहा है मेरा, ठीक है। We have multiple applications as well. ऐसी प्रोडक्शन है, QA है, dev है। मैं किस पे काम कर रहा हूँ, on which platform I'm, or which application service I'm providing services, that is important. आप बोलोगे तो सर्विस नाउ में कहाँ दिखता है ये? Let me show you. ठीक है, let me come here. सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर ये जो हम देख रहे हैं CSDM, ये हमें क्यों पता होना चाहिए एक्चुअली, पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल या
मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है. सो नाउ इफ यू कम टू द इंसिडेंट, यू कैन सी द बिजनेस सर्विस, राइट. ये कहां से आता है? ये यहां से आता है, ये बिजनेस सर्विस. एंड हियर यू कैन पुट द सर्विस ऑफरिंग, ये वाला. एंड देन यू कैन सेलेक्ट योर CI. यहां पर आपका एप्लीकेशन सर्विस भी चलेगा. लेट मी शो यू. क्लास ये भी एक एप्लीकेशन. So I can raise a change or I can raise an incident on the application service as well. Now the question comes कि क्यों पता होना चाहिए मुझे? The problem is that before the CSDM part, we just have a CMDB. हम components level पर ही अपनी चीजों को manage कर रहे थे. But as I say, guys, now everything is in the service format. जो भी सब service में होता है. Like I am giving a service, right? Training is a service. To provide that service, I have a different infrastructure on my side. I have an internet, I have a broadband, I have a laptop, I have a charger, kind of things. Okay, but what I say, if you're facing any issue in the training content, training stuff, you can ask me. That is your production application service. लेकिन अगर आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, I'm not liable on that. That is your maybe dev or QA. So it is a way that how you provide the service to the customer. ये revolution kind of the format है कि कंपोनेंट्स लेवल पे काम नहीं हो रहा, बिकॉज एज आई सेड दैट इन द बिगनिंग, IT डिपार्टमेंट गिविंग सर्विस टू द HR एज वेल, लीगल एज वेल, फाइनेंस एज वेल. अब सबके लिए वो अलग अलग स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे. दे विल नॉट हैव डिफरेंट सर्वर्स और द कंपोनेंट्स. सो दे से आई एम सेलिंग एज अ बंडल. सर्विस दे रहा हूं मैं आपको, लेंगे तो बताओ. एंड इन द बैकग्राउंड आई हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, आई विल मेक दैट पार्ट. आपको सिर्फ सर्विस के पैसे देना, बाकी किसी के पैसे नहीं देने. आई टेक केयर दैट पर्टिकुलर पार्ट. So they introduce this concept to make the life and the tracking easy for the everybody. Okay. ठीक है. Let me give you this particular document link. अच्छा लगा मुझे, इसमें एक दो एग्जांपल्स भी हैं. इसको पढ़ना, स्पेसिफिकली इसके एग्जांपल्स को पढ़ना और ट्राई करना कि आप लोग ऐसे एक बिल्ड कर पाओ. इसमें एक दो एग्जांपल्स है, जैसे हमने एक देखा, इफ यू स्क्रॉल डाउन, रेलवे का भी है कि हाउ दे बिल्ड एवरीथिंग टुगेदर. The only key point for us is important when we go for the what I can say consulting. We ask our customer, what are your technical services, what are your business services, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता. कस्टमर का यार सर्विसेज क्या होती है. लाइक इफ इट्स सिंपल एग्जांपल, I join a new company and I install the email in my phone. ठीक है. Now Microsoft is the what I can say service provider for that email. Microsoft says I am providing two type of services. Sorry, I provide one type of service, email. Now in the service offering, I can provide email on the phone and I can provide email on the web. ये मेरी offerings हैं. Microsoft का portfolio बहुत बड़ा है. Email is just one service they're giving us. And in the phone, I have two services. पहले यही थी, BlackBerry और non BlackBerry.
क्योंकि पहले ईमेल्स ब्लैकबेरी के अलावा चलती नहीं थी किसी के ऊपर. You have to go to the web address and all things will be there. Right? ये उनकी सर्विस ऑफरिंग थी आगे. Then my company says no, I want to use only the web based. आप फोन को सपोर्ट मत करो. Then I join a new company. I want to be install the email on my phone. It was not installing. I go to my manager. Hey, I'm not able to install the email on my phone. Sorry, Atul, we can't install the emails on the phone because we did not purchase that service from the Microsoft for our employees. तो नहीं करने देगा वो. तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे. Read this very interesting topic. I'm telling you, it's very, very, very interesting topic. सर मैं मुझे बताओ सर, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो समझो, मैं अगर किसी सर्विस नाउ है, कोई कंपनी सर्विस नाउ यूज कर रही है और उनके पास तीनों एनवायरनमेंट है, ओके, तो मैं उनको सर्विस दूंगा कि मैं आई विल गिव द प्रोडक्शन सपोर्ट, क्यूए सपोर्ट, और मैं टेस्ट के सिर्फ सर्वर सपोर्ट दूंगा, आई विल नॉट गिव एप्लीकेशन सपोर्ट. तो ये जो सपोर्ट हुआ ये सब मेरा सर्विस हुआ, करेक्ट? हाँ, ठीक है. और दे विल, if any incident is logged to the application support, so they will raise a CI which is CI नहीं, इंसिडेंट. attached to, हाँ, इंसिडेंट में वो CI सिलेक्ट करेंगे हाँ, जो प्रोडक्शन को मैप्ड है. yes. Okay, got it. So like we have a CA relationship, in the same manner we have a service relationship as well. So if you see one more thing, if I come back here, इसमें चलते हैं, ठीक है. This says that when you're using the CSDM, ठीक है, ये वही जो हमने डिस्कस किया अभी सारा ऑलमोस्ट, बट टेबल्स के साथ है, थोड़ा लाइफ साइकिल भी है, ठीक है. लेट मी स्क्रॉल डाउन क्विकली. Yeah, ठीक है. This picture says that what I'm saying, how it map to ServiceNow. When I talk about the business capability, so I'm talking about this particular table. When talking about business application, it's talking to this particular table. तो ये टेबल लेवल पर डिस्कशंस हो रही है सारी कि कौन सा कंसेप्ट किस टेबल से मैप करता है. मैंने कहा रिक्वेस्ट आइटम, रिक्वेस्ट अतुल व्हाट इज द टेबल, s_req, रिक्वेस्ट आइटम s_req आइटम. ये फिजिकल टेबल है. कंसेप्चुअल अलग है, फिजिकल अलग है. बट ऑल्सो वन मोर थिंग विच जस्ट सेज व्हेन यू आर बिल्डिंग दिस CSDM, ठीक है, इसमें रिलेशनशिप अलग आगे है क्या? हाँ, ये this says, they mean ServiceNow says if you are implementing the CSDM, जैसे कल था ना CMD, in the CMDB we have a suggested relationship, but here no suggested, they fix it. If you want to link any business capability with the business application, it should be only this particular relationship, no other relationship should be there. अगर आपको business capability को business service से मैप करना है, then it should be only provided by relationship, no other relationship there. This is what the founding principle of this particular concept. कि until unless your thoughts, your definitions, your relationship, your tables are not same for everybody, तब तक आपका CSDM mature नहीं होगा. So they given कि भाई इतने रिलेशनशिप काम करेंगे इसमें बस. It's not up to you कि आप किसी भी तरह से कुछ भी बना लो. No, that's not fair. That's not correct. तो ये वैसा है. सर व्हाट आई थिंक इज ये बहुत आर्किटेक्ट लेवल का नहीं हो जा रहा है? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा आर्किटेक्ट लेवल. No, I'll give one more thing. Okay, if it's look heavy to you, I have created a complete series of the CSDM. इसी white paper को use करके 37 pages को use करके तकरीबन 8 या 9 वीडियोस मैंने बनाई है. Go and watch that. आर्किटेक्ट लेवल पे आपको कहीं नहीं दिखेगा ये. जो आर्किटेक्ट का था वो मैंने डिस्कस ही नहीं किया. अभी लाइफ साइकिल तक तो हम गए नहीं इसके अंदर because that is too much complicated. It's a very high level view I have given you.
given you guys. Time निकालो, थोड़ा सा पढ़ो. You will get clarity on this particular part. Doubt, question, clarification. ये जो portfolio था, it is like marketing also, because what we do in the marketing. Right. Okay. But I will not say marketing 100%. It is sort of marketing. Okay. Because you have to tell to your customers, right, that what services you can provide. So that is the portfolio we're talking here. Chaliye, all good. Let me stop the recording and take you. I have one more doubt. Good. But not with the same topic. What is coaching assessment? Coaching assessment. Yes. क्या कर रहे थे सर्विस नाउ में जो कोचिंग असेसमेंट मिला आपको? SLA. उसमें कहाँ देखा आपने? It is in the incident form when you create that SLA. That is downside. That coaching assessment है. I'll share the screenshot if you want. एक बार करना screen share. The screenshot I'll share. Actually, I have not joined from the laptop, and my laptop is Okay. it will take time. As far as I remember, or I know, is mainly we use this coaching assessment to coach our users. Users means employees specifically. On the basis of the SLA, why SLA has been breached, how we can improve that SLA, what was the reason for the same. So this is a different module of the coaching assessment in service now. I'm not 100% sure, but I read somewhere this thing. Actually, I had gone through the document also of the service now on the coaching assessment. I was not able to clear it. Means what is that? Send me the link. I'll go through and we'll give you current checklist on this. Okay. Okay. And one more on the in the report part, I was not able to clear on exclusion and preserver. Exclusion and preserver in the report part. रिपोर्ट में नहीं होगा ना, वो तो हमने क्लोनिंग में किया था. हाँ, means in the cloning part. अच्छा. ठीक है. But what is exclusion and what is preserver? So मतलब उसमें डाउट क्या है, मतलब अंडरस्टैंड नहीं है या मुझे अंडरस्टैंडिंग में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डिफरेंस. ठीक है, I'll take this part, no problem. और okay, these two, just I have these two doubts. just put in the group once again. I'll do that part for you. Okay, and for the coaching assignment, I'll share the link also. Yes, I'll go through that part and update you on that part. Okay. Good. Chaliye, any other question? Okay, let me stop the recording quickly and we'll take attendance now.